Welcome back everyone. In previous module, what we did is we have prepared comparative statements. That is comparative balance sheet as well as comparative income statement. Now, from this module, what we'll do is we'll understand how to make a common size statement. Okay? उसका theory हमने पहले ही theory part में किया है पहले के modules में, but अभी practical question हमें करना है. So let us read question number 5. It says balance sheet of LMN Limited for year ending 31st March 20. So this is the balance sheet, liability side and asset sides we have. You are required to prepare common size statement. So first of all, what we need to do is, again, this horizontal format we have to convert into vertical, like we did in comparative statement. Okay. So first, this horizontal format we need to convert in vertical format. This is for balance sheet only. In this question, they have asked only balance sheet. But again, for income statement also, we're going to do the same. So right now, for this balance sheet, we will convert it into vertical format first. So here we go. Common size statement we have. This is the, what we can say, ruling. This is the format of common size statement. You have particulars, absolute amount and percentage of total. That is what we have to write. Okay. This is the only thing we need. So first we'll have vertical format. पहला क्या है उसमें तो sources of fund. So under sources of fund, the first thing is owner's fund, or we call it as shareholders fund. Now you know, right? Now under this, what we'll write first is this: equity share capital and preference share capital. So equity share capital amount 4,50,000, preference share capital amount 40,000. Now how to calculate this percentage? For that we'll wait. We'll write the full format first, and then we'll start calculating percentage. Okay. So after this, after share capital, the next thing is reserves and surplus. So we'll write reserve surplus as well. That is 75,000. The total of your owner's fund is 5,65,000. Now after owner's fund, the next thing we're going to do is, yes, borrowed fund. So under borrowed fund, the first thing, secured loans, 1,50,000. Unsecured loans, these are 1 lakh. Now, let us take total on outer side, like not on outer side actually, we'll take total here itself, 2,50,000, that is total of borrowed funds. Now, total owner's fund and total borrowed fund, we'll take total in outer column. Look at it, total funds available, that is first part. Sources of fund ka total, hum yahan pe likh rahe, that is A plus B. What is A? Owner's fund, and B is borrowed fund. So, the amount is 8,15,000. Now, here, sorry, I skipped it. Here, this is the percentage column. So, whatever totals you're going to take in this column itself, not on outer column. This is not an outer column. This is percentage column altogether, different. So, yes, whatever total of funds available we have, it is 8,15,000. Now, we'll try to understand whether our application of funds are also 8,15,000. That is what we need to do. So, under application of fund, the very first thing we write is fixed asset. So, fixed asset ka amount 4,50,000. Then we have investments, that is 75,000. And then we have working capital. Not only current asset will write, but also will deduct current liabilities from it. So, third part is working capital. So, current assets are 3,65,000 less current liabilities, which are 75,000. So, working capital is 2,90,000. Now, again, if we have to take total, what we need is fixed assets, investments and working capital. Please look at my hand. Fixed assets, investments and working capital. The next total is total funds employed, or we can say total funds applied, which is again 8,15,000. 450 plus 75 plus 290. So, 8,15,000. So, this is how we have prepared our vertical common size statement. We have converted our balance sheet into vertical statement. Now what we have to do is we have to calculate percentage. अभी नाम क्या दिया है? Common size. एक common size लेना है और उस हिसाब से बाकी percentage हमें calculate करना है यहाँ पे. Common size statement we are doing. Comparative का part हो गया. I hope you have understood that comparative statement. Now for common size statement, what we have to do in balance sheet is we have to take total as 100%. बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो 100% अज्यूम करना है. मतलब क्या? तो ये देखो यहाँ पे 8,15,000 और 8,15,000. अभी
टोटल तो सेम ही आना चाहिए बैलेंस शीट का, दैट वी नो. सो 8,15,000 हैज टू बी 100%. लुक एट इट. 8,15,000 को मैंने 100% अज्यूम किया. अभी बेस्ड ऑन दिस कि 8,15,000 100% है, तो बाकी अमाउंट्स कितना, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. Okay, so we are taking a common size for each and every item in balance sheet. That is what common size statement is. Okay, for equity share capital amount is 4,50,000. So 8,15,000 is 100%. 4,50,000 is how much percent? Cross multiply you can do, right? Straight away. Or we have a formula as well. Look at the formula. This is the formula we have. Amount of item divide by total funds available. So for this part, it is total funds available. For this part, this is total funds applied. So formula is total of balance sheet actually. If we have to just keep it in mind, the formula is amount of item divided by total of balance sheet into 100, because balance sheet total will always be same, no? So it can be total funds available or total funds applied. It is okay, one and the same. So for this first half, we are having this formula. Look at it now. 4,50,000 amount of item divided by 8,15,000, that is total funds available, into 100. So that comes to 55.21%. Have you got this? Now accordingly, each and every amount ka percentage will calculate. Look at it now. 40,000 divided by 8,15,000 into 100. It will give you 4.9%. 75,000 divided by 8,15,000 into 100. It will give you 9.20%. Then 5,65,000 divided by 8,15,000 into 100. It will give you 69.32%. Then again 1,50,000 divided by 8,15,000 into 100. That comes to 18.4, and so on. Whatever amounts we have, every time that amount divided by total into 100. That is how we'll calculate. Okay. Now please tell me, what about this? How you'll calculate percentage for this amount, 1 lakh? Superb, correct. आपने बोला ना, मन में बोला ना, तो आ रहा है आपको. थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और. So 1 lakh divided by 8,15,000 into 100. That is what we have, 12.26%. And then 2,50,000 divided by 8,15,000 into 100. That is 30.67%. So this is how we have to calculate. भाई और उनकी बहनों, यहां पे मैंने एक क्लिक किया और कैलकुलेशन सामने आ गया. क्यों? क्योंकि ये पीपीटी बना हुआ है. आपको लगता है आपको इतना जल्दी ये सब अमाउंट्स आएगा? आएगा, लेकिन उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सर अभी आप बताओ, हम ऐसे नींद में सो रहे, देख रहे, जाग रहे, बीच में क्या कर रहे पता नहीं. ऐसे करोगे तो नहीं आएगा. यू शुड ऑलवेज बी ऑन योर टोज. मतलब क्या? जब मैं ये आपको बता रहा था, कितने लोग हैं आप में से कि सच्ची सर हमने बुक और पेन लिया था, नोटबुक और पेन, और जैसे ही आपने ये बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है, हमने वीडियो पॉज किया सर और हमने खुद कैलकुलेट करके देखा. अभी हंस रहे हो मन में, सबको बताया, किसी ने नहीं किया ये. अरे लेकिन करना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो एग्जाम में टाइम जाएगा. देखो ये ऐसे परसेंटेज निकालने हैं, एग्जाम में कितना टाइम जाएगा अगर आपको ये पता ही नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है. क्यों? क्योंकि सर ने बताया था, हमने खाली देखा था. मूवी देख रहे, ऐसा मोबाइल पे ये देख रहे. ऐसे नहीं चलेगा. यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑलवेज. अकाउंटिंग के लिए मैथ्स और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तो मैथ्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये सिंपल वाला है, ज्यादा डरावना कुछ नहीं है अकाउंटिंग में मैथ्स, है ना. लेकिन इसका प्रैक्टिस रहेगा तो पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा. नहीं तो वापस आओगे मुझे बताने, सर पेपर ही नहीं हुआ, सर टाइम कम पड़ा. टाइम कम नहीं पड़ा दोस्त, आपका मेहनत कम पड़ गया. जब कैलकुलेशंस के लिए टाइम था तब आपने किया नहीं. चलो बहुत बोल दिया मैंने, लेकिन समझ रहे हो ना आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं. हाँ, खुद से ट्राई करो. हियर वी गो. अभी ट्राई करके देखो. इसके लिए पॉज करो वीडियो, कैलकुलेट करो ये हर एक अमाउंट का परसेंटेज. अभी क्या होगा, यहां पे जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला, खाली यहां पे टोटल फंड्स अवेलेबल लिखा था फॉर्मूला में. नाउ फॉर दीज अमाउंट्स विल राइट टोटल फंड्स अप्लाइड. अभी इससे भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवेलेबल और अप्लाइड का अमाउंट तो सेम ही है, राइट. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, लुक एट दिस. अमाउंट ऑफ आइटम डिवाइड बाय टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इनटू 100. एम्प्लॉयड भी 8,15,000 ही है, राइट. सो अकॉर्डिंगली करके देखो. अभी पॉज करो ना वीडियो,
करो करो जरा कैलकुलेशंस, आपको समझेगा कैसे होता है कैलकुलेशंस, कितना टाइम जाता है, अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट योर टाइम इन एग्जाम। चलो पॉज करो वीडियो और ये कैलकुलेट करके बताओ ये सब का परसेंटेज, और फिर रिज्यूम करना वीडियो टू जस्ट क्रॉस चेक कि हमारा बराबर आया कि नहीं आया। हियर वी गो, आपने सबने कैलकुलेट किया है आंसर्स, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। सो व्हाट विल बी योर अमाउंट? 4,50,000 पहला अमाउंट फिक्स्ड एसेट का है 4,50,000 डिवाइड बाय 8,15,000 इनटू 100, सो इट इज 55.21। 75,000 divided by 8,15,000 into 100, it is 9.2. 3,65,000 divided by 8,15,000 into 100, which is 44.78. 75,000 divided by 8,15,000 into 100, which is 9.2. Now the amount is negative. You can make a bracket here as well. No worries. ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि माइनस करना था इसलिए नेगेटिव है। अमाउंट एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, इसलिए परसेंटेज को नेगेटिव माइनस ऐसा साइन नहीं दिया, ठीक है। Now 2,90,000 divided by 8,15,000 into 100, so that comes to 35.58%. अगर आपके ये सब आंसर्स बराबर है, सच्ची में आपने ये कैलकुलेट किए थे और करेक्ट भी है, तो बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से आपको तालियां। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और ऐसे ही बैठे बैठे थक रहे हो, तो प्लीज ये बंद करो बैठना और काम करना चालू करो, ठीक है। सो दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हमने बैलेंस शीट कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, विल कम इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल टू टीच यू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट।